तो इंडिया तो बट मुसलमानों के रूल में ही एक पावर बना था। अदरवाइज उससे पहले तो प्रिंसली स्टेट्स थी। उससे पहले चंद्रा गुप्ता की भी देखें तो वो लिमिटेड एक एरिया था जहाँ पे। Chandragupta, you see, I'm talking to, I think it is Chandragupta times. He has written 700 years back. So I don't think Mughals were only 500, 2 or 300 years back or 400 years, 700 years back. So जब उस वक्त तो मेरे ख्याल में only India and China were there in the limelight. हम्म। उस वक्त तो अमेरिका तो मेरे ख्याल में था ही नहीं. हम्म। And the question is this thing that उसने लिखा है कि उसमें टू थ्री थिंग्स उसने लिखा है. एक नंबर वन, इफ इंडिया पुट्स इट्स एजुकेशन इन प्लेस, जो हम्म। एजुकेशन जो है कि मतलब ही हैज गिवन सम एग्जांपल्स दैट जो उनका हाई ग्रेड क्या नाम हाई स्कूल के बच्चे हैं, दे डोंट नो 9+6 कितना है एंड ऑल दैट, because it is the schools are there but they are not being taught what they should be taught, just for the sake of their school education. So he says that that needs to be corrected because education, China has done this development all because the first thing they did is they put more stress on education. हम्म। मैं living in Singapore once, I am affected a lot by Singapore in a way. Lee Kuan Yew को पूछा कि why you are, it's a Chinese dominated country. हम्म। एंड उसने बोला कि उसको पूछा गया कि why you are having this main language English, not Chinese, हम्म। you know, because normally it would have been like Chinese would be more, because Chinese is 90% of population Chinese hai, and they know Chinese. उसने बोला I want my people to be sort of adjust in the world and do with the world trade, and I am a trading country. So my first primary language is English. हम्म। So हम्म। that is why I made it. And you can go and you can go into Singapore, everybody knows English. हम्म। Without English, you cannot do anything. Everything, all हम्म। official language is English in a way. हम्म। तो मतलब ये है कि this is how अब इंडिया में इंग्लिश अभी हो रहा है, बट इज नॉट टू दैट लेवल बिकॉज यू हैव टू चाइना ने भी किया है टू द लार्ज एक्सटेंट. दिस इज हाउ वर्ल्ड गोज. You हम्म। see, because if I don't understand any other language, I will understand English. So majority of the people in the world who are in trade and other things know in English. So it is important for countries to go ahead in the world that to have English. So उसने एक reason ये भी दिया है education. एक पार्ट वो है. एंड वेदर बिकॉज ऑफ दिस मोदी रिजीम जो इसने ये स्टार्ट किया है ये सारा, अगर वो ये रोकेंगे, हम्म। there is a possibility that India will reach a stage because इंडिया ने जो एडवांटेज इस वक्त किया है because of the trouble between China and America and the West, they are trying to fill that gap of production, shifting production, हम्म। to India, हम्म। because they have the necessary engineers, they have हम्म। the necessary population, हम्म। they have a market also. So the production center, just like what happened in China, हम्म। that they had the internal market also and the external market also. हम्म। So देखिए एक बिजनेसमैन क्या है, जब हम सपोज आई वाज इन कश्मीर एंड आई वाज हेडिंग द चैम्बर, तो हम जब गवर्नमेंट के साथ भी बात करते थे या किसी के साथ बात करते थे, तो व्हाट वी वुड लुक टू इज वाज दिस थिंग दैट व्हाट आवर एसेट्स इन द सेंस व्हाट इज आवर रॉ मटेरियल अवेलेबल. हम्म। कोई भी बिजनेस चलेगा नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, आपको मार्केट की जरूरत है. जो मार्केट कितना बड़ा है छोटा है, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस, स्टार्ट एन इंडस्ट्री, स्टार्ट अ. दैट इज व्हाई big industry, let us say for example, cannot come into Kashmir in a big way because they don't have any train connection. So हम्म। because the goods have to move, the हम्म। goods have to move from the hinterland to the port, हम्म। from for exports or anything like that, or within the country also, within any country for that matter. So ये जो बात है कि एक तो पहले आप देखते हैं जो बिजनेसमैन होता है, कोई भी देखता है, वो देखता है रॉ मटेरियल क्या है, उस हम्म। पे क्या बन सकता है, उसकी क्या मार्केट है टोटल. सो इंडिया इज इन अ पोजिशन to हम्म। give both internal market also and
because of this technical, that they have a very big population of IITs and engineers, they can do production. The only thing is they're not, productivity is not very high. The productivity is another factor which a businessman takes or industrialist takes into account कि productivity क्या है एक बंदे की. तो ये अब it has been also sort of उसमें भी, because of artificial intelligence, lot of productivity is not only based on human beings but also on what technology you have got. So ये सब चीजें देखकर मेरे को लगता है, India is in a position, maybe another 5 years of, if they put their act together, they may be, it may be an alternate currency in the next 3, 4, 5 years if they put their act together, and they do not do this, you see, or else India is at this position at this time. On the other side, if the communal divide is there, ये चीजें हैं, तो it can also break up because of that. डॉक्टर साहब, ये इसका तो मतलब ये हुआ कि यूक्रेन की वॉर के बाद जो अमेरिका की करेंसी को डेंट लगाया, उससे पहले जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ईरान की डील से, न्यूक्लियर डील से पुल आउट किया अमेरिका को, तो उस वक्त यूरोप के अंदर भी ये सवाल पैदा हुआ कि यूरोप अपनी करेंसी को दुनिया लेकर आए ताकि ये जो सेल्फिश यूनिलैटरलिज्म है अमेरिका की, इससे जान छुड़ाई जाए। और फिर ये जो यूक्रेन की वॉर के बाद आपको नहीं लगता कि हर जो मुल्क है वो ये सोचने पर मजबूर है कि ये ना हो कि नेक्स्ट उनकी बारी रशिया जैसी हो, तो इससे बेहतर है कि वो अल्टरनेटिव करेंसीज को तलाश करें। तो क्या दुनिया के अंदर यूरो आ जाएगा, इंडियन करेंसी, चाइनीज करेंसी, और करेंसीज जो हैं वो जो डिजिटल करेंसीज जिसे हम कहते हैं वो आ जाएंगी? तो इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि ये अमेरिकन करेंसी जो इरोड हो रही है इंटरनेशनल सिस्टम में, और क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए क्या है कि इसमें देखिए कि जो मैंने वो एग्जांपल आपको गोल्ड की इसीलिए दी, बिकॉज द थिंग इज, एंड ऑफ द डे these currencies are supported by what? America, at one point of time, whatever dollar they used to issue, they had gold reserves accordingly. उसका गारंटी वो थी कि फॉर एग्जांपल, अब तो आप तो मतलब वो तो बोलते हैं, मतलब उनकी करेंसी नोट पे तो नहीं लिखा है ना वो. सो माय पॉइंट इज हाँ, वो दिस थिंग प्रेसिडेंट कि निक्सन ने जो, अलहदा कर दिया था उसे गोल्ड से। हाँ, जी। exactly, exactly. So the question is this thing, that maybe the world will go back to that situation where all the currencies will be told to have gold reserves in that manner. अब मतलब मेरे को याद पड़ता है कि जब when this Narasimha Rao came as the prime minister, and India had to send gold reserves to the Bank of England to get a loan, from to because its currency had no value in the market. And that is not far. This is 1990, 1991, 92. So वो basically तो वही था ना कि they did not get, उस वक्त तो ये था कि मतलब बात यह है कि finally it may come to that. This is what I was talking to you about Mahathir thing, that gold should be, why should we be, because his problem had emanated because of the currency rate between the dollar and the ringgit. Overnight it had reduced its value by 4, 1:4 sort of. Dollar, हम जब मैंने start business किया सिंगापुर में, the dollar was to the currency of Malaysian ringgit was 1 to 1.5 or something like that. So, but this sorry, and now it it was now almost 4. So डॉक्टर साहब, अच्छा, वो प्रॉब्लम थी. इसका इम्पैक्ट आप पाकिस्तान पे क्या देखते हैं? यानी पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या पाकिस्तान की वीकनेसेस हैं, पाकिस्तान को थ्रेट्स क्या हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स क्या हैं? अगर इसको स्वॉट एनालिसिस करें, इस सारी सिचुएशन जो हमने डिस्कस की है, जहां इंडिया बेनिफिट ले रहा है अपने लोगों के लिए, वहां पे पाकिस्तान को आप अगर एनालाइज करें तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए साहब, पाकिस्तान को the number one, which I have told before also in one of your talks, that it did a mistake. I am talking about economically. Leave aside the political part of it. It did a mistake when they did this regime change. Because why? Economically, I'm talking about. Because Imran Khan had done one thing that, for example, he had started with Russia,
And maybe one of the reasons was that also that he was removed from office. हम्म That तो वो फिर he had already gone into that other group also. हम्म Although he was not saying that he will remain with that group, just like India he has done. India to it then took steps ahead of that, and geographically Pakistan is more suited for that because there is a continuity. There is a geographically also continuity between Soviet Union, Afghanistan, Pakistan, Iran, then finally to the Middle East and China on the other side. So ये एक बड़ा group, they lost that opportunity. And I don't know how events unfold in Pakistan to that extent कि क्या होगा कि अभी तो आप सुप्रीम कोर्ट भी पता नहीं इलेक्शन होगा नहीं होगा कब होगा, and what is going to be the fate, because economically I will say they are at a very big disadvantage economically. Politically की तो एक दूसरा मसला है कि मतलब politically भी हमको समझ आता है कि it is in disadvantage. For dollars, China, America will, for example, आपका जो IMF से नहीं हो रहा है, that also gives a reason that, they are trying to force things in other fields rather than economically to bring Pakistan in line with their thinking and not to, they तो may give it finally, but after taking necessary agreements, that लेकिन they will not go to the other. अगर ट्रेड सारा और स्पेशली ऑयल सारा यॉन में होता है तो ये पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं देगा डॉलर की वजह से वी आर अंडर प्रेशर एंड वी आर लुकिंग टुवर्ड्स आईएमएफ कि हमें कुछ सपोर्ट Exactly. दे दें It should, मेरा it ख्याल है should, पॉलिसी yes, में it तो should. एक शिफ्ट तो इस तरह आनी चाहिए आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया यहाँ पे जोडा फिशर हैं अमेरिकन उन्होंने एक ट्वीट किए कि जो डॉन के जो चीफ हैं ब्यूरो वॉशिंगटन डीसी के अंदर उन्होंने उनको बताया कि और प्राउडली बताया कि चीफ जस्टिस साहब को तब्दील कर दिया जाएगा नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे वो इलेक्शन को 2 साल पोस्टपोन कर देंगे और जिसके ऊपर खुद उन्होंने तो खैर नाम नहीं लिया था अनवर इकबाल साहब को मैं उसकी तरफ इशारा है अनवर इकबाल साहब ने दोबारा रिट्वीट करके बताया कि ये हमारी प्राइवेट कन्वर्सेशन थी तो आपने क्यों खोला तो इससे तो लग रहा ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस चेंज की तरफ नहीं देख रहे वो सिर्फ इसी में लगे हुए हैं कि इमरान खान को किस तरह से रोका जाए रिजीम तो चेंज हो गई लेकिन वो जो पब्लिक ओपिनियन है जिसको हम कहते हैं सुवेरेनिटी लाइज विद अल्लाह बट एक्सरसाइज बाय द पीपल जो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है और उसको तो हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे उसको किसी ना किसी तरीके से रोक रहे हैं जहां पे जिसका नतीजा ये है कि इदारों के दरमियान में टकराव इस वक्त जो मुकन्ना है वो इस वक्त अपनी जुडिशरी के साथ उसका हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है तो सारे इदारे कंट्रोवर्शियल नजर आ रहे हैं तो ये इस सूरत हाल में आपको लगता है कि हम ये जो एक सिचुएशन इंटरनेशनली डेवलप हो रही है जिससे पाकिस्तान को बेनिफिट लेना चाहिए था वो बेनिफिट तो नहीं ले रहे हम तो अपनी गिरेबानों में एक दूसरे के हाथ हैं देखिए यही तो है ना कि that's why I told you about the regime change, because इसके ताने बाने सब मिल रहे हैं वहीं, you know and with your sort of I can say whatever it is, the foreign minister being all the time in America, majority of the time he is spent in America. So there is something to it, because what is the need of going to America? Did he get something for Kashmir? Because, for example, one of the main foreign policy things is Kashmir. Did he get something for Kashmir? No. Did he get something for Pakistan as such? No. So there is something to it, and I have been personally also telling my friends and all that this all thing जो इस वक्त तो फ्रंट है आपका नवाज शरीफ एंड पार्टी का, बट बेसिक प्लानर इज जरदारी साहब. he is he is the contact between, I think, between the American administration and all and the Pakistan thing. So everything is controlled by him in a sort of a remote control thing, and all these things are done because Nawaz Sharif said, because they are losing Punjab, because that is their stronghold, because Imran Khan is becoming stronger in Punjab. That is why they are after him, so that they should not, because or else they will be lost forever. They will never be able to get any power, anything like that. So yeah, डॉक्टर and साहब that is.
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अब टाइम बहुत कम रह गया है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक भी, और एक सिलसिला आपके साथ वीकली ओके। हम शुरू करेंगे, इसके ऊपर मज़ीद तफसीलन बात करेंगे, स्पेशली अमेरिका के हवाले से, क्योंकि अमेरिकन ट्वीट्स ट्वीट्स आना शुरू हो गए इमरान खान साहब के फेवर में। तो एक तरफ कहा जाता है कि रिजीम चेंज में हाथ है, दूसरी तरफ उनकी फेवर में ट्वीट्स भी आ रही है, तो इसको हम इन लेंथ डिस्कस करेंगे। बहरहाल आपके वक्त का शुक्रिया। उसका भी रीजन है होगा। हाँ। देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर इट। नेक्स्ट वीक में डॉक्टर साहब इसको कंटिन्यू करेंगे। आपके वक्त का बहुत चलिए, शुक्रिया नाजरीन। चलिए सर, इस थैंक यू वेरी के लिए मच। यही काफी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर हम मुबिन शाह साहब को लेंगे और आप इनके तज्जियों से मुस्तफीद होंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।